So friends, there was a little bit of homework. I shared an audio file with you, right? I sent an audio file in the group. Lisa, you are in the group now, right? Everybody is in the group. I guess they are. Yeah. So let me open the book. Hello. Sir. Hello, Kekeshabita. Good evening, sir. Good evening, Noor. Good afternoon, Noor. Hey, we have to tell you this. Before 5 o'clock, we don't say good evening normally. Technically, we don't say good evening before 5 o'clock. This is technical information. After 5, after 6, we can say good evening. Our class starts at 4 o'clock. So we should say good afternoon. Yes. I'm playing Sharik Ali from Kolkata. Good evening, sir. Good afternoon, Sharik. You're looking amazing in the white kurta pajama. Yeah. So, what do I say? Yeah, the audio, right? Everybody, you listened? You listened to that conversation, 5 conversation with Annalisa? I was reading the text and I'm going to continue with that. Day 10 was left, if I'm not wrong. Day 10. Day 10. I love London. Do you have a book there? Yes. Dolly, please come in. Come here. Day 10. I love London. I love. Who is saying this? Annalisa is saying this. Parents sent Annalisa to London to study, to learn English, and she is here falling in love. Right? This is why parents don't send girls to study. Look what she's doing. She's saying, I love London. Shameless girl. You should focus on studying, not falling in love. I love London. What nonsense is this? Isn't it bad? Bad behavior? Yeah? Come on. She's here to learn English, and now she's saying, I love London. How will other parents send their daughters to London to study? They will also fall in love. Very bad behavior, isn't it? Okay, listen. Tape script 1.11. Annalisa's blog. Day 1. Welcome to my blog. It's in English. Hello, I'm an Italian student. I'm in Notting Hill, London, England. I'm here to learn English. My English family are the Wilsons. Peter, the husband, and Helen, the wife, have 3 children. Edward, 16, Rick, 19, and Rosie, 23. Rosie's married. They're very friendly,
but they speak very fast. It's difficult to understand them. Day 3. My first day at school. Today is my first English class at St. Martin's College. It's a big school in the center, in Covent Garden. It's near a lot of shops, cafes, and theaters. It's great. My class is very international. The students are from Mexico, Japan, Egypt, Spain, Hungary, and Switzerland. Our teacher's name is Charlotte. She's very young and she's very nice. I really like her. She's a good teacher. Day 10. I love London. I would like to share. The window is closed, so we should turn on the AC. Okay, close the door, please. Yeah. All right. Akansha, you shouldn't sit there. Akansha, you shouldn't sit there. You should sit in the corner somewhere away from the AC. This girl is a little allergic to, cold and this thing. Find another place, Akansha. I think where Ankita is sitting is the best place for you. Are you alone here? Where is Rishabh today? Rishabh is not here. Oh, wow, interesting. Yesterday you were not here. Akansha, why don't you go and sit there and Akansha could come and sit here? What do you think? Right? Go. Exchange your seats with Ankita. Ankita, please, because she should not be there, right in the direction of the AC flow. Go sit there. Yeah. I have to tell you, in English, whenever you're learning a language, any foreign language you're learning, not necessarily English, French, German, Russian, any language you learn, some parts will be easy and some parts will be difficult. Those parts where your mother tongue and the target language are similar, that part is easy. And where your mother tongue and the target language are different, it's going to be difficult. समझ में आई बात? Okay. In Hindi, we say एक सुंदर लड़की. एक सुंदर लड़की. Look at the arrangement. एक सुंदर लड़की. In Hindi. In English, we say a beautiful girl. So easy. No problems. Nobody struggles. Everybody understands because Hindi and English are very similar here. Look at the word order. A beautiful girl. And in English, in Hindi, a sundar ladki. Right. But some people struggle when they need to learn aam khana. They say mango eat. No. Aam khana. Eat mangoes. Computer bechna. Sell computers. So this part is difficult because Hindi and English are not similar here. Look at the word order. That's different. So there are language concepts which are different between English and Hindi. When those ideas are to be learned, it's going to be a little difficult for some people because Hindi and English are different there, not the same. So when it comes to learning adjectives, adjectives are very easy for us Indians because in Hindi, adjectives come before the nouns. Adjectives come before the ek mota aadmi, a fat man, ek acha teacher, a good teacher. Very similar. But people who speak Spanish don't find it easy. People who speak Spanish, they struggle. They find it very difficult to learn a beautiful girl. They say a girl beautiful. Why?
because in their own language, in Spanish, they say una chica bonita. Una chica bonita. A girl beautiful. That is their Spanish. In Spanish, adjective normally comes after the noun. So they have a habit and they say a girl beautiful, because in Spanish they have this order: una chica bonita, una casa grande, a house big. So Spanish people struggle with this idea. We don't, because our Hindi is similar. Ek bada ghar, a big house. Easy. Got it? So whenever Hindi and English are similar, you guys will not have any problems. But when English and Hindi are different from each other, you will struggle a little bit. In that moment, you should tell yourself, अपने आप को बोलना, oh, I'm learning a new language. It's different from Hindi. It's different from Hindi. क्यों होता है मत बोल देना ऐसे. एक बहुत ही बेकार सा सवाल बचपन से टीचर ने तुम लोग को सिखा रखा है, क्यों क्यों क्यों, और उसका जवाब हिंदी में. इंग्लिश में कोई चीज क्यों होता है, इसका जवाब हिंदी में देंगे. अरे पागल हो, अंग्रेजों ने जो भाषा इवॉल्व करी धीरे धीरे करके, कोई लैब में बैठ के किसी ने तो बनाई नहीं भाषा एक दिन. तो वो जो भाषा वहां बनी, उसका जवाब हिंदुस्तानी कैसे देगा कि क्यों है कैसे है. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून ऋषिकेश. हम लोग उसकी रीजनिंग सोच सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चलती होगी. अगर कोई पूछे स्पेनिश बोलने वाला कहे कि हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब वो अपने, अगर वो पूछना चाहे, वो भी सवाल तो मन में इसके जन्म लेगा ना. वो भाषा हिंदी नहीं होगी, लेकिन वो सवाल तो जन्म लेगा ना कि इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है. राइट. वो पूछेगा कि हम लोग तो बोलते हैं उना चिका बोनीता, मन में उसके ख्याल ये आएगा उना चिका बोनीता इज करेक्ट. वाई ए ब्यूटिफुल गर्ल, तो उसको समझना होगा इन इंग्लिश एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन्स. एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन्स. वैसे ही हमारे यहाँ हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेचना, इंग्लिश पढ़ाना, और इंग्लिश में बोलते हैं सेल कंप्यूटर्स, टीच इंग्लिश. तो लेसन क्या गया दिमाग में समझदार लोग, बताओ व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब पहले आता है, और जिस पे वो वर्ब किया गया, कंप्यूटर बेचना सेल, क्या बेचे भाई, कंप्यूटर, तो वो बाद में आता है इंग्लिश में. सेल कंप्यूटर्स, टीच इंग्लिश. तो ये धीरे धीरे ख्याल जब बैठते जाए, और साथ में मेरी इंग्लिश सुनने को मिलते रहेगी सिंपल वाली, तो ये लर्निंग है जो मैं ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ, और सुनना लैंग्वेज, ये दोनों मिल के आपको फ्लुएंट बनाएंगे. You already know a little bit of English. Everybody knows a little bit of English. तो ये मेरा बोलना इंग्लिश काम आ जाता है यहाँ पे. अगर आप जीरो इंग्लिश जानते हो, जो जीरो सोचते हो आप, वो अगर सच में जीरो होता तो मेरा इंग्लिश बोलना फिलहाल कोई मायने नहीं रखता. ऐसे बैठ के बोलना सिखा सकता है, लेकिन ऐसे बैठ के नहीं. मैं तो क्लास 1 में भी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ इंग्लिश जानते हैं वो मंकी जानते हैं, वो गो जानते हैं, वो कम जानते हैं. और इसी का सहारा लेते हुए मैं हाथ से, अपने शरीर से थोड़ी एक्टिंग करके उनसे इंग्लिश स्टोरीज उनको बोलता हूँ. और इंग्लिश स्टोरीज में नए नए वर्ड्स आते हैं. Yesterday I taught them a word grasshopper. Then they didn't understand. I showed them the photo. Tidda. I said, yeah, grasshopper. Okay, got it. तो आपके पास कुछ होता है जानकारी, उसको मैं बनाता हूँ बेस, और उसमें छोटी छोटी इमारतें ऊपर खड़ी करते चलिए. अब वो जो बेस है ऊंचा उठता चला जा रहा है इस इमारत की वजह से. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हाउ लैंग्वेज शुड बी टॉट. Whose camera is off here? Noor. Why are you off camera, Noor? You know that you are not allowed to keep your camera off in the online class. Noor, are you even there? Don't do this, Noor. Next time I see your camera off, I will fine you or remove you from the class. One of the two things. Sir, my
My camera is on, sir. Was it? Okay, maybe there was some problem here. Your My camera. camera is on, sir. Yes, yes, I can clearly see it is a network issue. My camera is on, sir. Yeah, I can see that. Your video has frozen. I love London. Now think about this sentence. I love London. Yeah. मुझे लंदन से प्यार है ना, यही ना? अच्छा मुझे बताओ, कभी तुमने ऐसी बात कही है किसी शहर के बारे में, मुझे शहर से प्यार है? कभी कहा है तुमने? कभी कहा है? हिंदी में कहा है? नहीं कहा है कभी। मुझे कोलकाता से प्यार है बहुत कम बोलते हैं सर, राइट? इसका कहने का मतलब यह है कि इसको लंदन बहुत अच्छा लगता है, फिर पसंद पे ही चलेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें एक शब्द का जो याद करवाए वो मीनिंग है, उससे आगे हटके कॉन्टेक्स्ट में जो फिट होगा वो वाली हिंदी बोलनी होगी। जब हम तोते की तरह एक ही वर्ड रिपीट करते रहेंगे, वी विल नेवर लर्न। वी हैव टू यूज आवर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, कॉमन सेंस, understand the context, and then use the right word. I love London, she says. And we'll say the same thing in English. I love Biharshi. I love English. I love teaching English. What does that mean? I really, really enjoy teaching English, right? If I say I love teaching English, what does it mean? It means I really, really enjoy teaching English. And when I say I love my daughter, meaning is obvious. Here, the feeling is different. So the word is the same, love, love, but Hello again. It's great here. it's great here. It's great here. I want to tell you, all those young people here, words cannot be translated and you will not get a real meaning. It's great here. Yeah. Mahan hai yahan. Nothing. You don't learn English that way. You learn it's great here. It means the person is very happy. Here refers to London. Here refers to London. She says it's great here. And where is she? She's in London. So she's saying it's great in London. It means she's very happy. She's very happy about the place. Now, you have been coming here for last 1 week or so, okay? 4 days, 5 days. If you guys are really happy here, you can say, wow, STC, it's great here. I'm learning English at STC. It's great here. I'm learning English at STC. It's great here. Now, this sentence is so different from Hindi. So different from Hindi. You are not going to learn it very easily. There are only 3 words, but you will not be able to use it so easily. Why? It will not feel right because you are used to Hindi sentences. Am I right? And in Hindi, you never say it's great here. And that's why this arrangement will not be on your lips very easily. Although the grammar and the vocabulary part is very simple and easy, still you will not be able to say these words so easily in your conversation. Suppose you are in a school and you're very happy about being at that school. You love that school. You can say, I go to XYZ school. It's great here. The teachers are very friendly. The students are all nice. Okay? It's great here. So she's showing her positive emotions with this sentence. It's great here. Danish hasn't come back. Okay. He's still in village. I love London. It's big but interesting. It's big. I like shopping. It's big but interesting. Normally what happens, big places can become a little boring as well. Okay. It's big but interesting. I like shopping, but it's very But it's very expensive. Read the sentence. I like shopping, but it's very expensive. And suggestion to some young boys and people here, focus on what we are doing. Don't look at other people. Don't look at what they're doing. Just look at one thing, like dear Vanshika. Focus on the teacher and focus on your learning. Vanshika does that so easily. It is easy for Vanshika to focus on the lesson, focus on the teacher. It's so easy for her. It's her nature.
Whatever she studies, I believe she does the same. Is that right, Vanshika? It's easy for you. It becomes your personality. For Ayat, it's her personality. She's only 10 years old, going to be 11. And it's easy for her to focus. And some people don't develop these habits in their childhood. They struggle to focus. Whatever they do, they cannot keep their mind on one thing. That's the problem. They just can't focus. So work on it, everybody, if you struggle. Shreya, by the way, she finds it very difficult to focus on one thing. But she's trying, I suppose. Right, Shreya? Okay. I like shopping, but it's very expensive. It refers to, I like shopping, but it is very expensive. Shopping is very expensive. I like shopping, but it's very expensive. I go to the parks. I go to the parks. They are really beautiful. So they refers to, don't say just parks. Don't just say parks. I'll tell you why. Parks means parks. They means they are really beautiful. The parks in London. They means the parks in London, not just parks. Parks means parks. Parks in general, any parks. But now, they are really beautiful. What is she talking about? She is talking about the parks in London. The parks in London are really beautiful. So they refers to the parks in London, not just parks. The parks in London. The parks in London are really beautiful. And I go to museums and galleries. And I go to museums and galleries. Museums are buildings, galleries are also buildings, but they have different things. Museums have old stuff from ancient times, statues and other things. Have you ever visited a museum? You have? Good for you, good for you. There is a small museum in Bihar Sharif near Subhash Park. Okay? There are some statues there, 1,000-year-old, 1,500-year-old statues. You guys can go and visit it, Maybe someday we will plan a trip from our school for the children, a trip to the museum. Yeah. Galleries are also buildings. What do you see at galleries? At galleries, you see paintings, art. They hang art on the walls and all, okay? And you go and enjoy watching them, looking at them. So that is called a gallery. I don't think there is a gallery in Bihar Sharif, okay? So she goes to museums and galleries. And you have galleries in your phone as well, now? What do you have there? Photos. Got it? Galleries? Okay. The National Gallery is free. There is a very big gallery called the National Gallery in London. And it means you can go and visit it without spending any money. You don't need to buy a ticket. You don't need to buy a ticket. The National Gallery is free. London is not free. Going to London is not free. Traveling to London is not free. Flying to London is not free, Vishal. Only the National Gallery is free. When you are at National Gallery, you don't need to buy a ticket. Right? Yeah. I go by bus or by underground. It's very easy. I go by bus or by underground. Observation hat on. Observation hat on. अपनी observation वाली cap पहन लीजिए. मतलब ये English में phrase है. Put your observation hat on. मतलब गौर करो. क्या गौर करोगे? By bus. अच्छा. In Hindi? Bus से. Right? Bus से. By bus.
अभी ये नहीं सोचने का कि जब जब से आएगा तो बाय लगाएंगे, ये बेवकूफी होगी। बोलना बस से, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कार से तो बाय कार, ट्रेन से, बस इतना जा सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। छड़ी से ना 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 ना, डोंट एवर गो देयर, डोंट इवन थिंक। छड़ी और कार में फर्क है, राइट? तो सर ने छड़ी से मारा मुझे, सर हिट मी विद स्टिक, सर हिट मी विद स्टिक। तो एक वर्ड है से, लेकिन अभी यहां पर बाय है, कहीं हो जाएगा विद, कहीं कुछ और, वो ऑब्जर्व वहां करना है। इसलिए मैंने कहा ऑब्जर्वेशन हैट ऑन गाइस। आई गो बाय बस, in English they say by bus, by train, by plane. Okay, she travels by bus or by underground. Look at the word underground, please. Look at the spelling of the word underground. Do you see a capital U? Do you see a capital U? It means it is a proper noun. Capital letters in the middle of the sentence. Either a mistake or a proper noun. या तो गलती से लिखा गया, या तो क्या है फिर वो proper noun. What do you think? Is it a mistake or a proper noun? It's a proper noun, guys. What is a proper noun? अगर पता ना हो तो किसी एक चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ग्रुप के नाम को नहीं। जैसे हम, तुम भी लड़के, ये भी लड़के, ये भी लड़के, ग्रुप सारे लड़के, तो लड़का प्रॉपर नाउन नहीं है। इस लड़के का नाम प्रिंस है, इस लड़के का नाम समीर है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिविजुअल का नाम, राइट? ये भी कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स, लेकिन ये HCL का कंप्यूटर, HCL इज अ प्रॉपर नाउन। ये माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूध 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 दूध, सारे दूध, राइट? लेकिन ये सुधा का दूध है, सुधा इज अ, ये अमूल का दूध है, अमूल इज अ, गॉट इट? तो अंडरग्राउंड इज अ प्रॉपर नाउन। A special train service, a special in London, called underground. There is not? What do you mean? The question is not very valid. When I said that it is written with capital U, that itself says that it is a proper noun, then what more do you want? Oh, no, 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 you didn't get it. There is a train system, I said, not a train. There is a train system, all right? And it is called the underground. Got it? The train system is called the underground. It's not just one train, it's a system. That is called the underground. She loves traveling by underground, okay? And in France, there is another train system called metro. And in India, we use British English, people say, right? But we did not copy underground, the name. We use the word metro, okay? I hope you understand. Now, there is a bullet train idea. Bullet train. We haven't got our first bullet train yet. It is still in the planning, right? We haven't got the bullet train ready. But in different countries, there are different bullet trains, different companies. In Japan, it is called something else, proper noun. In China, it has a different name, proper noun. Okay, the name of the company that runs fast trains. Bullet trains means, dear students, fast trains. Okay, let's see. So it is enough here. You misunderstood when I said the train system. You heard one train. No, it is not one train. It is a special train system, okay, called the underground. I go by bus or by underground. It's very easy. It's very easy. She says it's very easy to travel by bus, to travel by underground. It's very easy. The weather's okay. Cold, but sunny. The weather is okay, cold, but sunny. When we say cold, we have a different feeling. When Europeans say cold, they feel different.
Cold means -10, -5, -20, you know. For us, cold means relief from heat. Am I right, guys? In India, when you say cold, you feel good about the word cold weather. You don't feel bad about the word cold weather. When I say the weather is cold, अगर कोई यहाँ बोले कि मौसम ठंडा है तो अच्छा बता रहा है कि बुरा बता रहा है क्योंकि हमेशा तो हीट होती है यार. So we are fed up with the heat. We are fed up with the heat. India is different. India is a sunny place, hot, 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 right? We are near the equator. Okay, so we are hot. I mean, we are hot मतलब बहुत सी बातें हो सकती है. Okay, so Indian climate is hot. Let's say it this way. Indian climate is hot. European climate is not hot. Even their spring season is cold. Their autumn is cold. Only they have a small, short summer for 2-3 months when the temperature goes to 20, 30, 35. Nowadays, because of climate change and because of global warming, they are experiencing 40 degrees nowadays, very funny. But otherwise, they love summer season. Europeans love because their summer is different from our summer. Our summer means go inside the house. Their summer means let's go to the beach. Understand? Do you understand what I'm saying? Their summer is fun time. Let's go to the beach. Our summer, stay at home. School holiday. Don't go to school. It's so hot. Stay indoors. So our summer is very different from their summer. Okay. The weather is okay, cold but sunny. The food is okay too. Okay. The food is okay too. And the coffee is great. And the coffee is great. She really likes coffee. Italian coffee, is very famous everywhere. Italian coffee, Italian coffee is famous all over the world. Yeah. Italian cuisine, Italian food items, and Italian coffee. Oh, actually, Italy is a very famous country. Rome is the capital of Italy. Rome was a big empire, Roman Empire in the past. They had a civilization. They built stadiums 2,000 years ago. Big stadiums. There are a lot of Italian coffee bars in London. There are a lot of Italian coffee bars in London. There are a lot of Italian coffee bars in London. And there are a lot of Indian restaurants in London too, because Indian food is also very famous all over the world. Yeah. London. Check out my photos. Check out my photos. A funny thing I'll tell you, in London, there are a lot of Pakistanis and Bangladeshis who run restaurants, okay? But you know what? They don't call Pakistani restaurant and Bangladeshi restaurant. They don't call it Indian restaurant. They can't even use their name to name their business. And they say they will fight with India. Losers. Name their restaurants, Pakistani restaurant, and see how many people come. They name it Indian restaurants. Bangladeshis too, they name it Indian restaurants. Because India has a history, right? Their original identity is India. Yeah. Okay, so I finished the text, guys. I finished the text for you. I hope you enjoyed reading the text and you learned a lot of things. Okay, they can refer to not only people, they can refer to things too. We saw they word was used for parks here, right? They was used for parks. The parks in London, they are really beautiful. So they is not only used for people, they can be used for things too. For example, I have 5 pens, but they're all bad. Okay, I have 5 pens, but they are all bad. Got it? Means none of them writes. I need. उगता नहीं है क्या बेटा? उगता नहीं है. सूरज गिर रहा है. Right? Children love this word. उग नहीं रहा है. I love observing words this way, I mean, some children, okay, why do they say ug nahi raha hai? Because they have heard that word.
उन्होंने कहीं बुक वगैरह पढ़ के नहीं सीखा। याद रखना, तुम वही बोलोगे जो तुम सुनोगे। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश सुनना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, बेवकूफ है वो, तुम्हें सिर्फ मुसीबत में डाल के छोड़ देंगे। तुम पर जिम्मेवारी डाल देते हैं। बोलो नहीं, सुनो, खुद ब खुद होगा। गालियां सुनते हैं बचपन में, बोलने लग जाते कि नहीं? तब कैसे? कोई ट्रेनिंग दी जाती है हमें बोलने के लिए? गाली किसी को सिखाई गई गालियां बोलने? दे जस्ट हियर इट एंड स्टार्ट सेइंग इट। सो सुनने से आदत पड़ती है। अब आपकी मर्जी, आप क्या सुनना चाहते हो, गालियां या इंग्लिश? जो बोलना चाहते हो वो सुनो, दैट्स सिंपल। क्या मैंने कन्विंस किया आपको ये बात के लिए कि सुनने से ही सीखना होता है बोलना? बिना सुने कोई चीज आप, you are here in Bihar, you're not speaking any Bangla, go and live in Kolkata for 2 months and you will start to make one or two sentences in Bangla. What happened? You managed to learn some while listening, not started speaking. Automatically speaking, वो जो 2-4 लाइन तुम्हारे मुंह से निकलेंगे 2 महीने रहने के बाद, वो क्यों निकले? क्योंकि तुम बोलना शुरू कर दिए, सुनना शुरू किए तुम 2 महीने। फर्स्ट डे थोड़ी बोलोगे बांग्ला, 2 महीने को 4 महीने बनाओ। नाउ यू विल स्पीक अ फ्यू मोर सेंटेंसेस। क्यों भाई? बिकॉज यू गॉट मोर लिसनिंग, मोर लिसनिंग। सो प्लीज put in your account more and more listening of English, and you will see the surprise result how you will speak English. I am a Biharshri person. I never went outside of Bihar to study. I have always been a Hindi medium student. Then how come do I speak English well? What happened? I gave myself the opportunity to listen to English. That's it. And that is what I'm offering you here in this class, a listening experience. And when you listen, make sure you listen to easy stuff. Easy stuff is more effective. Let's see. Listening section. In every unit, we will have reading, we'll have listening, we'll have grammar, we'll have writing. Understand? We'll have plenty of exercises. We'll do everything in every unit. This is unit 1, everybody. Listen to 5 conversations. क्या पढ़ा हम लोगों ने? श्रिया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Listen to 5 conversations. हिंदी बोलना। 5 conversations सुनिए, लेकिन सुनना के लिए वर्ड बीच में आया हुआ। कौन सा वर्ड आया हुआ बीच में? लिसन तो है ही सुनना के लिए, ठीक है, 5 भी है ही, कॉन्वर्सेशन भी। एक वर्ड है जो हिंदी से लेना देना नहीं, बताओ कौन सा? 2। तुम कौन सा भूलोगे? वही छूटेगा। क्यों छूटेगा? वो हिंदी से अलग है, तो योर माइंड विल नॉट बी एबल टू कीप इट। तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दैट वन वर्ड। 5 कॉन्वर्सेशन सुनिए। कैसे? मैं सुन रहा हूं। इंग्लिश, आई एम लिसनिंग। आई लिसन। I gave you the practice yesterday. I am listening. मैं गजल सुन रहा हूं। I'm listening. कर दिया ना वही। देखो क्या सुनने की बात करी थी यहां? 5 कॉन्वर्सेशन। कैसे बोला था? Listen to 5 conversation. तो मैं गजल सुन रहा हूं, listening to ghazals. TO2 फिर से यही है ऑब्जर्वेशन। क्या तुम्हारा दिमाग खुल रहा है? क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए? सामने जो दिखे उसको ऑब्जर्व करो। क्या लिखा है पढ़ो। लिसन टू 5 कॉन्वर्सेशन। तो दिमाग में मैसेज लेके जाओ। मैसेज क्या जानना चाहिए यार? लिसन मतलब तो पढ़ना सुनना हो गया, 5 मतलब 5 भी होगा, कॉन्वर्सेशन। ये 2 का तो कोई हिंदी है ही नहीं, यानी कि हमें इसका ख्याल रखना होगा। इसके लिए कोई हिंदी नहीं आएगी। मैं एक कहानी सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग To a story. I'm listening to a story. कितना अजीब है। हिंदी से अलग हुआ ना इंग्लिश। यहाँ पे सब चीज सही जा रहा, लिसनिंग तक सही था, स्टोरी तक सही था, बीच में क्या आ गया? और वो तुम्हारे किसी हिंदी का कोई एक्सप्लेनेशन फिट नहीं होने वाला। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ इतना कि इंग्लिश जब इवॉल्व हुआ तो उन्होंने TO2 के साथ ही बोला है लिसन को। तो हमें भी सीखना पड़ेगा उनके जैसा बोलना। और हम भी क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग ए स्टोरी। I'm listening to a
मैं ऑडियो फाइल सुनता हूं। मैं सुनता हूं, सुन रहा हूं नहीं है। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। मैं सुनता हूं। आई लिसन। आई I लिसन। listen to I audio. listen to the audio files every day. I listen to the audio files every day. ये हाईलाइट करा है। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने से आदत पड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम गौर करना शुरू कर दोगे, यू विल बी अ फास्ट लर्नर। ऐसे अभी सब लोगों ने पढ़ा लिसन टू 5 कॉन्वर्सेशन, और पहला बार आप लोगों ने क्या बोला था? आई एम लिसनिंग गजल। यही बोल दिया ना, क्योंकि हिंदी का दिमाग टेक ओवर कर गया कि लिसन के बाद गजल है तो गजल बोल दिया। आई एम लिसनिंग गजल हो गया, लेकिन बोलना क्या चाहिए था आपको? आई एम लिसनिंग टू आई एम लिसनिंग टू सम म्यूजिक। आई एम लिसनिंग टू सम, मैं थोड़ा संगीत सुन रहा हूं। मैं थोड़ा संगीत सुन रहा हूं। हम आपको सुन रहे हैं सर। आई एम लिसनिंग टू यू। ऐसा मजेदार है ना? इंडिया में इंग्लिश बोलने का वैल्यू नहीं है। इंडिया में करेक्ट इंग्लिश बोलने का वैल्यू है। बहुत से देशों में एरर्स को अवॉइड कर देते हैं लोग, इग्नोर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पेनिश बोलो, रशियन बोलो, आपकी गलतियां होंगी। कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा कि क्यों ये ग्रामर फॉलो नहीं किया, वो ग्रामर फॉलो नहीं किया। आप समझ रहे हो? इफ टू पीपल फ्रॉम इंडिया आर टॉकिंग इन स्पेनिश, तो एक दो एरर्स को इश्यू नहीं बनाएंगे। वो समझ जा रहे हैं बात को। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द केस विद इंग्लिश एवरीवेयर एल्स, बट इन सम कंट्रीज एरर्स इन इंग्लिश आर अ बिग डील। जहां इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहां इंग्लिश को खाली बोलना काफी नहीं है, इंग्लिश को सही बोलना जरूरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है जहां, जैसे केन्या। केन्या में इंग्लिश बोलना काफी नहीं है, करेक्ट बोलना जरूरी है। वहां भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। लेकिन अगर आप फ्रेंच हो, आपने थोड़ी ऊपर नीचे इंग्लिश बोली है, कोई बात नहीं, लोग आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके एग्जाम नहीं होते हर जगह। आप बात कर रहे हो क्या? बट वेन इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एग्जाम होंगे जॉब के लिए, और वहां तो एक्यूरेसी ही चेक करेंगे वो, कितना करेक्ट बोलते हो आप, कितना करेक्ट जानते हो आप। तो समडे, किसी दिन, समडे यू विल हैव अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। आई एम लिसनिंग म्यूजिक इन माई कार। Spot the error in the sentence. I'm listening to music in my कार में संगीत सुन रहा हूं। I'm listening to music. वो टू छूटा, there is an error. अब वो कोई क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हारे चचा करते हैं, इंग्लैंड वाले, तो you have to follow him, right? Because you are learning his language. मैं आपको जानकारी की बात बताऊं, शायद आपके काम आए दिमाग खोलने में। आपने आर्टिकल पढ़ा ना इंग्लिश में, ए एन एन, है ना? हिंदी में तो हो ही नहीं। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, काफी है। लेकिन इंग्लिश में आई एम टीचर नहीं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये क्लास है, तुम्हारा क्लब नहीं। दिस इज ए क्लास, नॉट ए क्लब, नॉट योर क्लब। दिस इज ए क्लास। ये ए आता है तो तुम्हें इंग्लिश में एक वर्ड का टेंशन है, ए, और एन हो जाता है जब वॉवेल से स्टार्ट करते हो। तो एम आई राइट? एम आई राइट? पढ़ो, सीखने की कोशिश करो स्पेनिश, सीखने की कोशिश करो इटालियन। पहले सीखोगे उन, फिर सीखोगे उना, फिर सीखोगे उनो, पागल बन जाओगे। एक ही ए के लिए 3-3 4-4 वर्ड सीखना पड़ेगा तुम्हें। मतलब आर्टिकल ही, एक आर्टिकल नहीं होता ए, 4-4 6-6 आर्टिकल्स होते हैं वहां। बात समझ में आ रही है? ये इतना है। एक आर्टिकल द जानते हो ना तुम इंग्लिश में, वहां एक आर्टिकल द के बदले स्पेनिश में होगा एल, ला, लोस, लास, 4 वर्ड। तो चारों के लिए रूल जानना पड़ेगा, कब एल बोलना है, कब ला बोलना है, कब लोस बोलना है, कब लास बोलना है। 4 रूल दिमाग में रखना होगा। यहां तो उससे द एक। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बनी? शायद इसलिए
English is easy to learn. English is easy to learn. अब बताओ एक ही चीज का ख्याल रखना. मैं और बताऊं तुम्हें कैसे इंग्लिश आसान है. बोलो. एक मोटा आदमी, दो मोटे आदमी. एक मोटा आदमी, दो मोटा आदमी नहीं बोल सकते. दो मोटा आदमी नहीं बोल सकते. क्या बोलना पड़ेगा? मोटा को मोटे में बदले ना, एडजेक्टिव को चेंज किया ना. इंग्लिश में ए फैट मैन, टू फैट मैन, फैट मैन, फैट मैन, टू फैट मैन. ध्यान दीजिए, फैट का कोई चेंज नहीं हुआ. फैट में, फैट एडजेक्टिव में कोई नंबर नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल. ए बिग हाउस, 5 बिग हाउसेस. तो इंग्लिश इज कंपैरेटिवली इजी. बहुत से टेंशन ही नहीं होते इंग्लिश में. वर्ब की बात करोगे, 5 फॉर्म्स है मात्र. V1, V2, V3, V4 एंड V5. बस सारे फॉर्म्स खत्म. देख लो हिंदी में, कोई हिंदी सीखने की कोशिश करता है, इतने वर्ब फॉर्म्स हैं, पागल बन जाता है बेचारा वो. हम लोग की तो मदर टंग है, तो हम तो बचपन से आदत डाल चुके हैं. नो इश्यूज. बट व्हेन somebody tries to learn Hindi as an adult, they find it very challenging. Similar is German and Spanish. So many verb forms. स्पेनिश में थोड़े कम, जर्मन में और ज्यादा टेंशन. संस्कृत की तरह. संस्कृत also has a lot of verb forms. याद है ना? लोट लकार, लट लकार, लंग लकार, बहुत सारा था ना. हाँ, गच्छत, गच्छति, गच्छता, गच्छसी, गच्छता. मुझे याद भी नहीं रहा, भूल गए. गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा. ये तो खाली एक बात हो गया, जाता हूं वाला. फिर होएगा जाएगा, जा रहा था. इतने 9 फॉर्म्स तो हुए सिर्फ प्रेजेंट में यार. 9 फॉर्म्स है सिर्फ प्रेजेंट में. अहम गच्छामी, त्वम गच्छसी. ये दोनों के दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है. युवाम गच्छत, गच्छत, यूयम गच्छत. कि सब की पागल बन जाता है इंसान. इतने सारे फॉर्म्स है. रिजल्ट देख लो. People are not learning Sanskrit as often, means not as many people are learning Sanskrit. इतना कॉम्प्लिकेटेड है. दूसरा, अगर आपने इंग्लैंड, इंग्लिश इज ऑल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इंग्लैंड रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दे हैड इन्फ्लुएंस. सो पीपल आर लर्निंग इंग्लिश because the whole world was dealing with English at a time about 100 years, 200 years ago. The whole world was dealing with the English. So obviously they had to learn English, and we are still speaking English. तो शायद मैंने स्कूल में कहा भी बोल देता हूं. It is our duty, moral duty to keep Hindi alive. ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है हिंदी को जिंदा रखना. And it is our I will say job to learn English because it helps in our career. But never ever underestimate Hindi. Hindi is your mother tongue. Keep it alive. If you stop speaking Hindi, Hindi will die. A language is dead. A lot of languages are dying every year. The world of languages is shrinking. Okay? Less number of languages exist today than last year. आज दुनिया में कम languages हैं पिछले साल की तुलना में. And this trend is going on. हर साल कुछ languages गायब हो जाती हैं. गायब मतलब उसको बोलने वाले नहीं बचते. Change हो गए. उन्होंने दूसरी भाषा बोलना शुरू कर दिया है. There is a rate. You can Google this. We are going to keep Hindi alive. This is our moral responsibility to keep Hindi alive. But we will learn English because it will help us with our career. All right, guys. Listen to 5 conversations. Complete the chart. Listen to 5 conversations and complete the chart. Are we ready? Are we ready? Okay, I'm playing the audio. 1.13. Tape script 1.13. 1. Goodbye, Annalisa. Have a good day at school. Thank you, Peter. And you have a good day at work.
the questions are, where is Annalisa? Where is? So when you heard this conversation, your mind started thinking naturally. Okay? And you can answer where Annalisa is. Maybe I'll play it one more time for you guys. I'll play it one more Teen. time for you. 1. Goodbye, Annalisa. Have a good day at school. Thank you, Peter. And you have a good day at work. Maybe you are not able to understand what they're saying. I'll help you. Okay? Some people, not everybody. Let's listen again. 1. Goodbye, Annalisa. Goodbye, Annalisa. Have a good day at school. Have a good day at school. Thank you, Peter. And you have a good day at work. Thank you, Peter. And you have a good day at work. Now, when you hear this, what do you realize? Where is Annalisa? At school. She's at school. Who is she with? Peter. Peter. So I have a few scenarios in my mind. Okay. Maybe she is leaving her house. Right now she's at home, but she is going. She's leaving. So she says, bye, Peter. Goodbye, Peter. Peter says, goodbye, Annalisa. Right? She's leaving the house for school. Or maybe the second situation, she is coming out of the car. She's coming out of the, where? On the road, outside the college, outside the school. Maybe Peter is there to drop her, right? And she's saying, goodbye, Annalisa, have a good day at school. And he's going to office. So she says, thank you, Peter, and you have a good day at work. So there are two situations. Both are fine. So maybe she's at home. Maybe she's outside the school on the road, right? And who is she with? Peter. She is with Peter. She is with Peter, right? मैं आपको बताऊं कुछ बातें, एक ऐसी बात बोलता हूं जो सुनकर आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं कर पाएगा. आप इंग्लिश सीखने बैठे हैं, आज तक इंग्लिश सीखने का मतलब हुआ एक एक सेंटेंस के बारे में उसका रूल्स पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, टीचर स्पून फीड करते रहे आपको, हर बात दिमाग में डालते रहे और आप बैठ के चुपचाप उस रूल को टीचर के किस भाषा में सुनते रहे? हिंदी में. हिंदी में. यही है इंग्लिश पढ़ने का रियल मतलब अब तक रहा है आपके. मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहा हूँ? यकीन मानिए आपके क्लास में बैठने से आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस का कोई फायदा हुआ? जीरो हुआ. आपके सामने एग्जाम्पल्स टीचर ने दिए, रूल समझाए पहले, फिर उस पे बैठा करके एक एग्जाम्पल दिया और आप खुश हुए कि हाँ ये एग्जाम्पल उस रूल को फॉलो कर रहा है. आप खुश हुए और कहे हाँ समझ में आया, बहुत अच्छा. अच्छा मैं बताऊं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज सुन नहीं रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अपनी मदर टंग हिंदी में बात कर रहे थे. यही हुआ था ना? ऐसा समझ लो कि एक क्लास में बैठे हो, विनय सर टॉपिक बन जाए और टीचर बताए विनय सर ऐसा आदमी है, विनय सर वैसा आदमी है, और आपके हाँ अच्छा देखो विनय सर ऐसा आदमी, एक बार ऐसा हुआ था, वो बहुत बहुत बहादुर आदमी है, एक बार ऐसा हुआ था उसके घर पे डायनासोर ने हमला किया, वो अंदर से कलछुल लेके आया अपने किचन से और डायनासोर के मुंह में ऐसा डाल दिया और बोला बोल डायनासोर. तो ठीक है, तो आपको पता चला कहानी सुन के, आओ विनय सर बहुत बहादुर हैं, और एक दिन आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डायनासोर आए और मैं ऐसे करूं तो आपको विनय सर की बहादुरी का बेहतर एहसास होगा ना? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? पॉइंट समझ में आ रही बात? कहानी सुनना इज डिफरेंट, बीइंग विद दैट पर्सन इज डिफरेंट. तो इंग्लिश के बारे में कहानी सुनना और इंग्लिश में आवाजें सुनना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. आपको इसकी जरूरत बचपन से है, बस कोई है नहीं ये देने वाला कि आपसे कोई इंग्लिश में बात करे, चाहे वो आपके प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हो, चाहे कोचिंग क्लास के इंग्लिश के टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो. ओके, वन मोर थिंग जो मेन बात अब आएगी. आपको लगता है कि आप जो सीखोगे आपके टीचर आपको सिखाएंगे, ठीक है? सुनो मेरी बात, 80% ऑफ योर नॉलेज विल बी सबकॉन्शियस लर्निंग, थ्रू सबकॉन्शियस लर्निंग.
आपकी जो 80% नॉलेज होगी, जो भाई जानते हो ना, उसका 80% हिस्सा थ्रू सबकॉन्शियस लर्निंग के आएगी। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सीखा वो चीज। आप कभी कोई दिन नहीं बता पाओगे कि इस दिन सर ने ये बताया था, 80% चीजों के बारे में, और 20% चीजें आप जान के पढ़ोगे कि अच्छा सर ने ये पढ़ाया, सर ने ये बताया। वैसी चीजें कितनी होंगी? 20%। चूंकि आपको पढ़ाया जाता है कॉन्शियसली, इसलिए आप 20% पे अटके रहते हैं हमेशा। क्योंकि जो भी नॉलेज लैंग्वेज का अक्वायर किया जाएगा क्लास वगैरह में बैठ के, अगर सक्सेसफुल हुए आप, तो 80% क्या होना है आपका? वो सबकॉन्शियस। मतलब बेटा आपको एहसास ना हो जिस चीज का, बस हो रहा है लेकिन एहसास। अभी मैंने कहा था हु इज शिविद, हु इज शिविद, मैंने इस पे कोई ग्रामर एक्सप्लेन नहीं किया था, और मैंने 2 बार कहा हु इज शिविद, हु इज शिविद। ठीक है, आप लोग ये आवाजें सुन रहे हैं और इन आवाजों के साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट करते चले जाएंगे। एक दिन आप भी बोलेंगे हु इज शिविद। सर, in this photo it's not your wife, who are you with? I'll say I have multiple. Okay. Okay, guys, listen, who is she with? She is with Peter, right? She is with 2, तो ये सबकॉन्शियस लर्निंग तभी ज्यादा बेहतर होगी जब आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, कोई और ख्याल में ना डूबे, तो सबकॉन्शियस लर्निंग होती जाएगी। Good morning, Annalisa. Where's your homework? Good morning, Annalisa. Where is your homework? The teacher speaks. Oh, sorry, my bad, my bad. It's here, Charlotte. It's here, Charlotte. Now, when you listen to this part, what do you feel in your mind? Where is Annalisa? At school. Right, at school, fine. Any particular place? She is in class, right? She is in her classroom. Agree? Do you all agree? The teacher asked, where is your homework, Annalisa? And she says, it's here, Charlotte. We all know Charlotte is the name of her. Teacher. Who is she Teacher. with? She is with her Teacher. teacher, Charlotte, right? Yeah. Teacher. Ready for number 3? Yes. 3, Hello, Cristo. Where are you from? Hello, Cristo. Where are you from? Hello, Cristo. Where are you from? I'm from Mexico. I'm from Mexico. Now, in this conversation, where is Annalisa? She is at college. She's at school. We don't know where exactly. Maybe in the classroom, maybe in the canteen, maybe in the park. Who is she with? She is with Cristo, and Cristo is her father's friend. Then he is another student. He is her classmate. He is her? Right. So she is with her classmate, Cristo. 4, A ticket, please. A ticket, please. The National Gallery is free. The National Gallery is free. Oh, good. Thank you. Oh, good. Thank you. So, where is Annalisa? At the National Gallery. She's at the National Gallery, right? And who is she with? Her friend. She's with the attendant. She's with the receptionist. She's with the caretaker. Any word you want to use, doesn't matter. The woman who's... You don't need a ticket. And, Annalisa, you don't need a ticket. This place, the National Gallery, is free. This person is a caretaker, maybe. She's an attendant, maybe. She's a receptionist, maybe. She works at the National Gallery, this lady. She said, no, you don't need a ticket. Go in. Yeah. Yep. No problems. Okay. 5. 5, A coffee, please. A coffee, please. Certainly. Certainly. Sure. Certainly.
Here you are. Here you are. Where is Annalisa? At a Canteen. cafe. She's at an Italian coffee Cafe. bar. At an Italian coffee Coffee bar, bar. right? And who is she with? Right? The person who works there? The person who? And the person who Works there. works in a coffee bar is called barista. It's an Italian word. Barista. Barista. Okay? A person who works at a coffee bar is called a barista. Barista. A barista's job is to make coffee and serve it to the customers. A barista. Okay. So barista is an Italian word actually, but as pizza is an Italian word, they have accepted it in English and many other languages. So barista is now an English word, but its origin is Italian. So she's with the person who works in the coffee bar. Any problems, anyone? No, sir. The audio is in the group. So you've already listened, right? Task for tomorrow. Listen and write down the audio script for 1.13. Listen to the audio file and write what they're saying. Write down in your notebook what they are saying in the audio. You think you understand? Very good. Show me. Write down what they're saying. Please come in. Close the door, please. Is it for me? Pass. My family really care about me so much. See? And you also know that I love healthy food, guys. You see sprouts here? Yeah? I love healthy food. I usually eat healthy things. Because I want to live a healthy life. I feel very scared when I think I will be old someday and my body will be weak someday. I feel very scared. I know it is a reality. It will happen, but I want to keep pushing it. Not now, not now. Okay. I'm 46, by the way. So 4 more years and I'll be 50. I hope I can stay this way when I'm 50. If I stay this way at 50, I'll be happy. I'll be very happy. Okay, guys. So 1.13. You have the audio file in the group. What is in the group? The audio file. Audio file means an MP3 file that you can play and listen to. That is called an audio file, right? You will listen to it and you will write down the audio script. A script means text. You will write down what they're saying in the audio. Is that okay? You can do it? It's your homework for tomorrow. Today. Tomorrow, okay? Yeah, today means what? I will check it tomorrow, of course. Yeah. Shall we move on? Shall we move on to the next exercise? You come twice, huh? For one thing, one time. Close the door. Okay. Vocabulary work. Vocabulary work. When I was a child, I used to say vocabulary. देखो ना लिखा भी तो है भोका VOC है vocabulary लेकिन नहीं हम लोग अब क्या पढ़ते हैं vocabulary vocabulary work vocabulary is uncountable English में बड़े funny चीजें हैं ध्यान दो सुनो words countable है ना 1 word 2 words 3 words 4 words countable vocabulary मतलब होता है word लेकिन vocabulary is uncountable you can't say 2 vocabularies आइडियाज होते बेटा ध्यान दो अभी शुरुआत है मैं बता रहा हूं vocabulary means word no doubt but there is a difference word is countable 1 word 2 words 3 words but vocabulary is so you can't say I learned 5 vocabulary today or 5 vocabularies today you can't say that I learned some vocabulary today I learned vocabulary जैसे water is uncountable I drank some water today. Similarly, I learned some vocabulary today. उसको countable बनाना है कर सकते हैं. I learned some vocabulary items. I learned some vocabulary items. So every word is a vocabulary item. Okay.
Vocabulary is an uncountable noun. इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाता हूं बेटा. ऑर्नामेंट मतलब ये होता है जो शरीर पे खूबसूरत चीजें डालते हैं, झुमका, नेकलेस, इसको ऑर्नामेंट कह सकते हैं और इसको ज्वेलरी भी कह सकते हैं. द डिफरेंस, ऑर्नामेंट इज काउंटेबल, ज्वेलरी इज नॉट. ज्वेलरी इज अनकाउंटेबल. ज्वेलरीज नहीं बोलते, ज्वेलरी, लेकिन ऑर्नामेंट्स हो सकता है. ऑर्नामेंट्स प्लूरल काउंटेबल. ठीक है. और बताऊं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, दोनों मतलब सलाह ही है, सजेशन एंड एडवाइस. सजेशन इज काउंटेबल, वन सजेशन, टू सजेशंस. एडवाइस इज अनकाउंटेबल. तो इंग्लिश में एक ही आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड्स होंगे दो, एक होगा काउंटेबल, एक होगा अनकाउंटेबल. मैं दिखाऊं और बताऊं. रहने की जगह हाउस, हाउस काउंटेबल, वन हाउस, टू हाउसेस. रहने की जगह, व्हाट इज द वर्ड? Nah, the word is Hanji. Oh, I'm forgetting the word. Anybody, please? Which allowance they pay you when you are in job? There is a technical word. I know the word. It just no. Give me a second. Give me a second. It is called accommodation. It is called accommodation. So accommodation is uncountable. They will offer you accommodation. They will offer you accommodation. मतलब रहने की जगह. They will offer you accommodation means they will offer you रहने की, लेकिन accommodation is uncountable. तो जैसे से आगे बढ़ेंगे आप इंग्लिश में बहुत कुछ सीख सकते हैं. प्रॉब्लम सिर्फ एक है, 10 साल की मेहनत हमारी बेकार जाती है. स्कूल में 10 साल हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हर साल एक नई किताब आती है इंग्लिश की, और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो सारी किताबें होती हैं इंग्लिश में. और बावजूद इसके संध्या कॉपी कर रही थी तुम्हारा आंसर, मैंने उस दिन देखा वो 4 में पहुंच गई है. तो बच्चे कॉपी करते हैं एक दूसरे, अपने सीनियर के कॉपी से, फेयर कॉपी से उतार लेते हैं और अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं. पेरेंट्स देख रहे, बैठ के लिख रहा है, उनके हिसाब से पढ़ाई हो रही है. सच में पढ़ाई क्या होती है अंकिता? दिमाग का बड़ा होना, दिमाग में जानकारी जाना, इसको पढ़ाई कहते हैं. बैठ के छापते रहना इज नॉट. मैं एक न्यूज़पेपर दे दूं तुम्हें, कहूं इसको उतार लो कॉपी में, तुमने पढ़ाई कर ली? तो तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या लिख रहे हो, बस लिख रहे हो. इज इट कॉल्ड पढ़ाई एट ऑल? 90%, 80% बच्चों के लिए पढ़ाई है, और उनके पेरेंट्स इस बात से खुश भी है कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. तो जब मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ उनको मैच करना पड़ता है तो पहले तो बच्चे परेशान होते हैं, अरे बाप रे ये इतना करना पड़ेगा. इसलिए मैं उम्मीद उनसे करता हूं जो ज्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि उनको चेंज करना आसान है. तो इन आवर स्कूल आई टीच इन क्लास 1 and 2, क्योंकि मुझे उनको शुरू से ही वो फाउंडेशन देना है जो मैं क्लास 6, 7, 8 में जाकर देखूंगा पेड़ बनते हुए. और आप लोग देख लो अपने आप को, सारे अलग अलग स्कूल से आए होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल से. लुक एट योर इंग्लिश. Isn't it pathetic? 10 साल की तुलना में देखा जाए तो pathetic. बोलो pathetic means? Pathetic means really, really, really bad. So bad that people feel pity on it. 10 साल में इतना सीखे. मैंने कितना ही समय बिता दिया होगा स्पेनिश और इटालियन के साथ. तुम ही सोचो, बिहार में रहते हुए कुछ ही समय बिताया होगा, right? And I follow the grammar of Italian so much better than you follow the grammar of English. Your exposure is more. You are familiar with more words in English. That's all. But what about the language? Language is not just words. Words in the right form and words in the right order. That's language. Yes or no? Words in the right form and words in the right order. Order मतलब क्रम, arrangement. तभी language बनती है. पानी, हम, पीना, छत, ग्लास, हो गया? हो गया? नहीं हुआ. लैंग्वेज नहीं हुआ ये. These are just words in random order, not in a sequence, not in the right order, not in the right form. So we also know only English words. We are going to change that situation through this class, through this course.
Okay, guys, let's move on to the next exercise. We have a couple of minutes left. Vocabulary work. क्लास खत्म ना ना अभी नहीं, शारिक की अम्मी, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ। अम्मी है कि बहन है शारिक? सर भाई है। भाई है? इतनी प्यारी सी आवाज भाई की। छोटा भाई है? हाँ सर। Okay, that's why boys, some young boys have very girly voice. You know, after they touch 13 or 14, then their voice becomes manly. Yeah, when Aryan, my nephew, he was 9, 9, 10, I could not differentiate his voice and Anushka, my niece's voice, brother and sister. But now he's 11, going to be 12, so now his voice is changing. His voice sounds more boyish. Yeah. Vocabulary work. हर बात, मैं जो भी बात करूं, बात में इंटरेस्ट लो। ये मत सोचो कि सर कौन सी बातें कर रहे हैं। ठीक है? सब्जेक्ट मैटर मुझे चुनने दो, टेंशन मत लो, बस इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो मेरी बातचीत में। मैं अपने घर के बारे में बात करूं, ओ अच्छा अच्छा ओके। मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करूं, ओ अच्छा ओके। मैं अपने स्कूल के बारे में बात करूं, ओके ओके। बस इंटरेस्ट लो, तुम्हारी इंग्लिश ठीक होती चली जाएगी। ऑलराइट? बिकॉज मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलता। I speak because I want to give you listening exposure. That's my job, sitting here in this classroom. Vocabulary work. What is the opposite adjective? Are you familiar with the word adjective, guys? In your childhood, you heard the word adjective, but it is not adjective. It is adjective. D is silent. D is silent. Adjective. So adjective are words. Adjectives are words. These words tell you something about a noun. For example, there is a teacher. Teacher, a noun. Now we want to describe the teacher with a word. A good teacher, a bad teacher, a friendly teacher, a strict teacher. All these 4 words, good, bad, friendly, and strict, are adjectives. So all the words in the blue, in the bold, are adjectives. You have to write the opposite adjective. Opposite. Come on, do it. It will take only a couple of minutes. Do it, guys. I'm putting it in the group too. Where is the book? I know. There are 1 or 2 words that you will think, oh, what about them? Don't worry, I'm here. I'll help you. Horrible coffee. Make a guess. What could it mean? Horrible coffee. A boy once said, Bhyanak chai. डरावना चाय। कहा, what do you mean? Sir, horrible means डरावना। तो ऐसे भी तो बच्चे होते हैं, इतने मानसिक रूप से दिवालिया। चाय भयानक और डरावना हो सकती है? उसमें से भूत निकल रहा है, हाथ निकल रहा है, तुम्हारा गला पकड़ रहा है। What do you mean? भयानक और डरावना चाय? When he said that, and I asked him, horrible tea, what do you mean? Horrible मतलब भयानक ही तो होता है, डरावना। तो ऐसे अगर होगा, दिमाग ऐसे चलेगा, तो you are going to struggle very much to learn English or any language. Horrible tea means good or bad. You like this tea or you don't like this tea? Don't like. And a horrible teacher is a teacher you like or you don't like? Don't like. Okay? Horrible day. It means you're very happy that day? No. Bad day. You understood horrible. Okay? You have joined a horrible class, right? Okay, fine. So she's horrible, right? Inaya, your sister Ayat is horrible, right? Ayat, who is horrible? You gonna call her horrible? You think she's horrible?
Yeah, you're changing. You are becoming mature. You're not taking tit for tat. Very good. Okay, guys. So I'm wrapping up now. We'll continue and tomorrow, okay? This exercise will, of course, be your homework. And maybe I will send a page in the group. I will send a page in the group, homework page. Samir, Junaid, I'll send a page in the group. Okay, that will be your homework. That's all for today, guys. Let's meet tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye, sir. Bye.